Good evening, dear students. This is my first lecture and I will be giving this lecture on isomerism in organic compounds. So before switching to isomerism, let me tell you what are organic compounds. Organic compounds are basically hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons. This is the simplest definition I can tell you. For example, hydrocarbons, by hydrocarbons I mean compounds containing carbon and hydrogen, or we can call these hydrocarbons as simple hydrocarbons because in these compounds only carbon and hydrogen, there's bonding between carbon and hydrogen, either carbon and carbon or carbon and hydrogen. So what is the difference between simple hydrocarbons and derivatives of hydrocarbons? Because I told you that organic compounds are hydrocarbons, that means simple hydrocarbons or derivatives of hydrocarbons. So simple hydrocarbons, I already told you that these are compounds made of carbon and hydrogen in which there is a bond between carbon and hydrogen or carbon and carbon. In derivatives of hydrocarbon, obviously there is bonding between carbon and hydrogen, but besides carbon and hydrogen, a heteroatom or group is present. So there can be more than one or two heteroatoms. These heteroatoms make a simple hydrocarbon derivative. For example, we have alkanes. In alkanes there are carbon and hydrogens only, but if I will replace one hydrogen of this alkane with hydroxyl group or with oxygen, we can get derivative. You can see in alcohols what happens is, what is the general formula of alcohols? ROH. So alcohols are having hydroxyl group, but how alcohols are formed? Why we call them derivatives? We call them derivatives because in these alcohols there is carbon, there is hydrogen, but besides carbon and hydrogen, oxygen is also present. So this presence of oxygen makes it derivative, because in simple hydrocarbons only carbon and hydrogens are present. When besides carbon and hydrogen, oxygen is also present, we call it derivative of hydrocarbon. So derivatives of hydrocarbons means that carbon hydrogen are present because it's mandatory to have carbon and hydrogen in organic compounds. But besides that, these basic, or we can say core elements, a heteroatom or heterogroup is present. So by heteroatom or heterogroup we means element or atom except carbon and hydrogen. So these are the basic points about organic compounds. Now isomerism in organic compounds, it's it is a very important lecture to know, very important topic to know, because when you know about the isomerisms in organic compounds, only then you can categorize different organic compounds. You can see that there are so many organic compounds having same molecular formula, but they don't belong, sometimes they don't belong to the same homologous series, sometimes their chain is different. So that is why it is important to know about isomerism in organic compounds. Now what is isomerism? Isomerism is basically a phenomena in which compounds have same molecular formula but they have different structure. By structure I mean different arrangement of atoms in 2D or 3D, in 3-dimensional space or in 2-dimensional plane. So आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है उसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है. फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज की. दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इट इज़ C6H12O6. C6H12O6, बट ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 है. देन fructose also have formula C6H12O6, but where lies the difference? Glucose is polyhydroxyaldehyde and this fructose is polyhydroxyketone. सो ये फ़र्क है, दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, लेकिन हाँ ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अलावा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है.
फ्रुक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बिसाइड्स कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का डिफरेंस है ये इनको आइसोमर्स बनाता है। अदरवाइज़ इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये इनको डिफरेंट कंपाउंड बनाता है। अदरवाइज़ इनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ सेम C6H12O6। देन देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स जहाँ पर जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, जो आइसोमेरिज्म जैसा फिनोमेना है वो दिखाते हैं। सो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म यही है कि जहाँ पर सिंपल सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफरेंट है। आइसोमेरिज्म जो है देन आइसोमेरिज्म के जो कोर टाइप्स आते हैं या मेन टाइप्स आते हैं वो दो आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम जो टू डायमेंशनल स्पेस पे जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स, स्टीरियो मीन्स स्पेस। सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स जहाँ पर जो कंपाउंड्स है ये वो फिनोमेना है जहाँ पर कंपाउंड जो है उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफरेंट होता है। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम यूजुअली 2D प्लेन की बात करते हैं, टू डायमेंशनल चीज़ों की बात करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्पेस में हम देखते हैं स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का। अगर वो सेम हुआ फाइन, एक ही कंपाउंड है, लेकिन अगर वो डिफरेंट हुआ ऑल्दो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है तो हम कहते हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑल्सो हैज़ टाइप्स, जैसे चेन आइसोमेरिज्म है, पोजिशन आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, देन वी है मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ऑल्सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के भी और टाइप्स आते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आता है, जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।